Hi dear students, today I will discuss about the chapter 2 stories about flying. The first chapter, his first flight in Hindi explanation. Okay, his first flight, it has been written by Liam O'Flaherty, and he was a major Irish novelist, short story writer, and must be ranked as one of the foremost socialist writers in the first part of the 20th century, writing about two common people's experience and from their perspective. Others are Shane O. Casey, Frederick O. Conner, Peter O. Donnell, Madison O. Cadden, and etc. Just like and all of them Irish language speakers who chose to write either in Irish or English. The story, his first flight, is written by Liam O'Flaherty. The story is based on a young seagull who was afraid to take his first flight because he was afraid that his wings would not support him while he was flying. One day, the whole family flew over a large plateau and taunted the young seagull for his first cowardice. How does that seabird's fear end? Who helps him? It is described in a very systematic way in this story. Okay, let us start now. This is the introduction of this chapter. Now it is explained in the first paragraph. The young seagull was alone on his leash. His two brothers and his sister had already flown away. The day before, he had been afraid to fly with them. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the leash and attempted to flap his wings, he became afraid. The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him, so he bent his head and ran away back to the little hole under the leash where he slept at night. Even when each of his brothers and his little sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. His father and mother had come around, calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his leash unless he flew away. But for the life of him, he could now not move. Now in Hindi, the young seagull was alone on his leash. वह छोटा समुद्री पक्षी जो अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। उसके दो भाई और बहन पहले ही दिन उड़ान भरकर जा चुके थे। यह उनके साथ उड़ने से डरता था। किसी प्रकार जब उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई और पंख फरफराने का प्रयत्न किया तो वह डर गया। नीचे समुद्र का बड़ा फैलाव था तथा नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे उसे निश्चित रूप में लगा कि उसके पंख उसकी सहायता नहीं करेंगे। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे वह अपने सुराख में चला गया, जहां यह रात को सोया, जबकि उसके भाइयों और छोटी बहन के पंख उसके पंखों से छोटे थे। भागकर किनारे तक चले गए। उन्होंने पंख फरफराए तथा उड़ गए थे, लेकिन वह डुबकी लगाने का साहस नहीं जुटा सके, जो कि उसे इतना निराशजनक प्रतीत हो रहा था। उसके माता पिता तेज आवाज में चहचहाते हुए उसे डांटते हुए आए थे। उन्होंने तब तक भूखा रखने की धमकी दी जब तक वह नहीं उड़ेगा, परंतु अपने जीवन को बचाने के लिए वह हिल नहीं सका। In the second paragraph, that was 24 hours ago,
Since then, nobody had come near him. The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. He had, in fact, seen his older brother catch his first herring and devour it, standing on a rock while his parents circled around, raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his covered eyes. Now in Hindi, ऐसा 24 घंटे पहले हुआ था, तब से कोई उसके पास नहीं आया। एक दिन पहले पूरे दिन भर उसने अपने माता पिता और अपने भाइयों व बहन के साथ उड़ते हुए देखा था। वे उन्हें उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करने, लहरों पर तैरने तथा मछली पकड़ने के लिए डुबकी लगाने की शिक्षा दे रहे थे। वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी प्रथम हैरिंग मछली पकड़ने और उसे निगलते हुए देखा था। वह एक चट्टान पर खड़ा था, जबकि उसके माता पिता गर्व से कूकते हुए चारों ओर चक्कर लगा रहे थे और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहा था। इन द थर्ड स्टांजा, द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज एंड फेस द साउथ. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, doing with their heads sunk into their necks. His father was preening the feathers on his white back. Only his mother was looking at him. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. Now and again tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped its side of her beak on the rock. The sight of the food maddened him. How he loved to peer food that way, scraping his beak now and again to wet it. इन हिंदी, जब सूरज आकाश में ऊपर चल रहा था, उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, उस पर तेज धूप थी। उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने पहले रात से कुछ नहीं खाया था। वह धीरे से चट्टान के किनारे पर गया और एक टांग को पंखों के नीचे छुपाकर एक दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने अपनी एक आंख मूंद ली और फिर दूसरी ओर उसने सोने का बहाना किया। फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने अपने भाई तथा बहन को अपनी गर्दनों में सिर छुपाकर पठार पर उगते हुए देखा था। उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपने पंखों को साफ कर रहा था। केवल उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। वह एक पठार पर ऊंची जमीन पर खड़ी थी तथा उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी। कभी कभी वह अपने पैरों में पड़ी मछली को काट रही थी तथा फिर अपनी चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़कर साफ कर रही थी। भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया था। उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था, चोंच को इस प्रकार रगड़कर तेज करना। The third paragraph, ga, 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 he cried, begging her to bring him some food. Ga, kole, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out eagerly, tapping the rock with the feet, trying to get nearer to her as she flew across. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger,
He dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into space. Then a monstrous terror seized him, and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment, he felt his wings spread outward. The wind rushed against his breast feathers, then under his stomach, and against his wings. He could feel his tips of his wings cutting through his air. He was not falling headlong now. In Hindi, गा गा गा, उसने कुछ भोजन अपने लिए लाने के लिए अपनी मां से प्रार्थना की। गुआ कोलह, व्यंग करते हुए वह उत्तर में चिल्लाई, पर वह दुख से पुकारता रहा तथा 1 या 2 मिनट के पश्चात वह खुशी से चीखा। उसकी मां ने मछली का एक टुकड़ा और उठाया और उसकी ओर उड़ी। वह उत्सुकता से आगे झुका और अपने पैरों से चट्टान को पीटा। जैसे ही वह उड़ रही थी, उसके अधिक समीप जाने का प्रयत्न किया, परंतु जब वह उसके बिल्कुल सामने थी, वह रुक गई। उसके पंख गतिहीन थे। उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग बच्चे की पहुंच में था। हैरान होते हुए उसने एक क्षण प्रतीक्षा की वह उसके और समीप क्यों नहीं आ रही थी। तब भूख से पागल होकर उसने मछली पर डुबकी लगाई। ऊंची चीख के साथ वह आगे बढ़ा और अंतरिक्ष में नीचे की ओर गिरा। तब एक राक्षसी भय उसमें व्याप्त हो गया और उसका दिल अस्थिर हो गया। उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया, लेकिन यह 1 मिनट में समाप्त हो गया। अगले ही क्षण उसने अपने पंखों को फैले हुए महसूस किया। हवा उसकी छाती के महीन बालों से टकराई। जब उसके पेट के नीचे और पंखों के नीचे हवा महसूस की, उसने अपने पंखों के किनारों पर हवा कटती हुई महसूस की। अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। अर्थात इस प्रकार से उन्होंने उड़ने के लिए वह सीखे। इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared upward. Ga, 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 kole. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. Then his father flew over him, screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and soar and curve, striking shrilly. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. Amusedly here means हैरान कर लेना. रीजेज here means लहर. ओके, नौ ही हिंदी. वह धीरे धीरे नीचे की ओर तथा बाहर की ओर उड़ रहा था. वह अब भयभीत नहीं था. उसका सिर चकराने लगा था. फिर उसने एक बार पंख फरफराए तथा यह ऊपर की ओर बढ़ गया. गा 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 कोला. उसकी माँ अपने पंखों से तेज करते हुए गुजरी. उसने माँ को फिर चीख कर उत्तर दिया. फिर उसका पिता चीखते हुए उसके ऊपर से उड़ा. उसने अपने 2 भाइयों और बहन को अपने चारों ओर घोड़े की भांति आगे कर तिरछी ऊपर उड़ती हुई तथा नीचे डुबकी लगाते हुए देखा. तब वह पूर्णतया भूल गया कि वह नहीं था तथा वह तेज चीखता हुआ आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने व डुबकी लगाने लगा. अब वह समुद्र के पास था. ठीक उसके ऊपर से वह उड़ रहा था. उसने विशाल हरा समुद्र अपने नीचे देखा तथा छोटे छोटे टीले उस पर तैर रहे थे. और उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया तथा प्रसन्न होकर काय काय करने लगा. नेक्स्ट फॉरवर्ड. His parents and his brothers and his sister had landed on this green, fluttering ahead of him. They were beckoning to him, calling slyly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings, but he was tired and weak with hunger, and he could not rise. Exhausted,
हेयर एग्जॉस्टेड मीन्स थका हुआ. By the strange exercise, his feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no farther. He was floating on it, and around him his family was screaming, praising him, and their beaks were offering him scraps of dogfish. He had made his first flight. In Hindi, उसके माता पिता, उसके भाई और बहन उस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे. वे उसे चीखते हुए बुला रहे थे. उसने डर से चीखते हुए तथा पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर उसने अपने हरे समुद्र पर उठने का प्रयत्न किया. उसके पंख उसमें डूब गए. वह भय से चिल्लाया और अपने पंखों को फड़फड़ाते हुए फिर से ऊपर उठने का प्रयत्न किया, किंतु वह थका हुआ था तथा भूख से कमजोर था तथा विचित्र एक अजीब तरीका का अभ्यास से थककर चूर था. वह और ऊपर नहीं उठ सका. उसके पांव हरे समुद्र में डूब गए थे. फिर उसके पेट ने उसे टच किया, छुआ, और इससे अधिक नहीं कुछ हुआ. उस पर तैर रहा था तथा उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था, उसकी प्रशंसा कर रहा था तथा उनकी चोंच डॉग मछली के टुकड़े उसे भेंट कर रहे थे. और उसने अपनी पहली उड़ान इस प्रकार से वह भर ली थी. अर्थात we have learned many things from this chapter. That means if you would have such types of confidence to do anything, then you can do it. So I hope that you would like it, and it would help you in the term 1 examinations. Okay, best of luck for your papers.